हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं 10 मेजर साइंस बिफोर जजमेंट डे। इस्लाम में ये कहा गया है कि आखिरत में कयामत के टाइम पे कयामत का दिन आएगा। एक दिन वो आएगा जब अल्लाह सबको उठा लेगा, मतलब सबको मार देगा, सबको कत्लेआम होगा हर जगह, और मतलब मुर्दों को भी जगाएगा और जजमेंट डे होगा। ये है द 10 मेजर साइंस बिफोर जजमेंट डे। जजमेंट डे वाले दिन उससे पहले 10 बड़े साइंस जो हमें देखने को मिलेंगे जजमेंट डे से पहले, कि कौन कौन से साइन हैं ऐसे कि हमें महसूस होगा कि हाँ अब आखिरत आ रही है, जजमेंट डे आ रहा है, अल्लाह अब सभी से हिसाब मांगेगा। वो वाले साइंस कौन से होंगे वो इस वीडियो के अंदर बताए गए हैं। वीडियो इंग्लिश में रहने वाली है, हम आप लोग तो गौर से देखना थोड़ा सा, और हम भी समझने की कोशिश करेंगे सभी चीजें। और लास्ट में वीडियो के अंदर क्या क्या बातें हुई है, किस किस चीज को कवर किया गया है, कौन से 10 मेजर साइंस है जो हमें जानने को मिलेंगे नए, वो हम जरूर आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना, एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कितना डर है उस जजमेंट डे से पहले, या फिर डर को क्या है। वैसे डर का तो कुछ नहीं है, जब अल्लाह सबको उठाएगा तो सभी को उठाएगा, और सबको जब अपने पास बुलाएगा तो बुलाएगा। मौत तो एक दिन आनी है, तो उससे डरने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन जजमेंट डे से पहले 10 मेजर साइंस हम जरूर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Merciful servant Allah's. The hadith is a Sahih Muslim that our Prophet sallallahu alaihi wasallam came across the Sahaba one day. They were sitting in the masjid. He came and they were having a heated discussion. So he said to them, "What are you discussing?" So they said, "We are talking about when Qiyamah will happen. We're talking about making a guess, when will Qiyamah happen?" So the Prophet ﷺ said, Qiyamah will not happen until you see its 10 signs. Okay. So now he said there are 10 signs that are directly linked to Qiyamah. There are 10 that are definitely in a different category. Qiyamah will not happen until you see its 10 signs. Then he mentioned them one by one, and I'm going to quickly list them now, and inshallah later on in our series we'll go over each one of them in a lot of detail. Number one, he said the dukhan. Dukhan is a dust, smoke, smog, the dukhan. And by the way, all 10 of these are specific. These are not trends. All 10 of these are one-off incidents. So these 10, it is a clear-cut sign. Something major is going to happen, catastrophic, cataclysmic, and everybody will recognize this is one of those major signs. So number one, the dukhan. Now, and this is not in order, we're going to mention this. This is just 10 that he said, they don't necessarily be in this order. Number two, the Dajjal. And that is a long discussion, we'll talk about that. Number three, the Dabba. And the Dabba is the beast. And he's mentioned in the Quran. Number 4, the rising of the sun from the west. Okay. So the sun rises in the east, sets in the west. One day it will rise from the west. Number 5, Nuzulu Isa ibn Maryam, the coming down of Isa ibn Maryam. Okay, this is a specific incident, and that is not ambiguous at all. Very clear. Number 6, Yajooj and Majooj, and the coming of Yajooj and Majooj. Okay, that is a major sign. We'll talk about them and some of the problems that are raised by this issue. We'll talk about it very frankly when we get to inshallah. Number 7, 8 and 9, 3 zalazil, 3 earthquakes that will shake the world. There's going to be major. This isn't a regional earthquake. These are earthquakes that essentially the world will know it is an earthquake. 3 zalazil that will shake the world. In one hadith, each next one will be bigger than the first one. So it's going to be 3 consecutive earthquakes that are, the whole world will know that there is an earthquake taking place. And then he said, وَآخِرُهُنَّ, the last of these signs, number 10, the last of these signs is a blazing fire that will emanate in Yemen and will force the people towards Ard al-Mahshar, or the land of resurrection. The land of resurrection. The very last sign of Judgment Day will be the fire that will force people to gather in one place, and that will be the end of humanity in that one place, which is going to be in Bilad al-Sham, as we will come to when we come to it. In another hadith he said, anytime one of these 10 comes, expect the other to come immediately after. So these 10 are like dominoes, one after the other. These 10, when the first one comes, khalas, the rest are going to follow very, very quickly. And the first of these 10, without a doubt, is the coming of Isa ibn Maryam. This is the first of these 10.
The first of these 10 is the coming of Isa ibn Maryam. And when Isa comes, the rest of these are going to come one by one, and that's it. Qiyamah will take place very shortly after the coming of Isa ibn Maryam. And the last of the minor signs links the first of the major signs. Let me repeat. The last of the minor signs links the first of the major signs. The last of the minor signs is the coming of the Mahdi. The coming of the Mahdi is the last of the minor signs. And the Mahdi will be alive and will interact with the first of the major signs, and that is who? Isa ibn Maryam. So the Mahdi and the Isa will coexist at the same time, same place, interact with one another, and it is literally as if the minor is coming to an end and the major is beginning, and then that's it. The rest will go from there until Qiyamah. वेल इसके अंदर बहुत सारी बातें हुई है, अगर आपने नोटिस किया है। इसके अंदर ज्यूस के बारे में कहा गया है, ज्यूस इस्लाम जो आएंगे क़यामत के आखिरी टाइम पे। याजूज माजूज के बारे में कहा गया है, दज्जाल के बारे में कहा गया है। हमने याजूज माजूज के बारे में सुना है क़यामत के टाइम पे वो आज़ाद हो जाएंगे। दज्जाल के बारे में सुना है, दज्जाल क़यामत के टाइम पे आज़ाद हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और सारे याजूज माजूज सारे हर नदी का पानी पी जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियोज़ के अंदर की हुई है। 10 मेजर साइंस हमने, ऐसा कुछ ही नहीं है जो हमने अलग से नहीं किया है, बट हाँ पहली जो मेजर साइंस है, जो टॉपिक था फर्स्ट, अगर मैं देखूँ इसके अंदर ही एक सेकेंड, पहला था इसके अंदर ढक्कन है। ढक्कन इज डस्ट स्मोक एंड स्मॉग, स्मैक एंड स्मॉग। ये इस तरह की चीज़ें, या तो होगा वो उस तरह की, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मोकी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वेदर, इतना पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, जो कि आज के टाइम में हो रहा है धीरे धीरे। तो लास्ट टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा, डस्ट इतनी जो धूल मिट्टी इतनी उड़ेगी उस तरह की। और अर्थक्वेक्स के बारे में हमने सुना है कि 3 मेजर अर्थक्वेक्स आएंगे, एक के बाद एक आएगा, और जो पहले आएगा वो कम होगा, उसके बाद वाला और ज़्यादा आएगा, तीसरा उससे भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरह की चीज़ें दुनिया को पता चलेगी। तो मेजर साइंस बहुत सारे हैं इसके अंदर 10, और हमने जो अलग अलग सुने हैं, जैसे दक्कन, ये क्या है, और किसी के बारे में अगर एक भी ऐसा मेजर साइंस है जो हमें स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड बनानी है, तो उसको मैं सर्च करके डेफिनेटली वीडियो के अंदर डालूंगा, और रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हम उसके ऊपर। लेकिन ये 10 मेजर साइंस है जो बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने कवर करिए है, और सारे के सारे एक दूसरे रिलेटेड है, जो हमने, ऐसा नहीं है पहली बार सुन रहे हैं हम, बहुत सारे कमाल के हैं यार। और मतलब ये चीज़ें लगता है कि हाँ ये रियलिटी है, यही सच्चाई है, इस तरह की चीज़ें सच में होगी। इस तरह की चीज़ें, ये सिर्फ बातें नहीं है, कही गई नहीं है, ये चीज़ें सच में होगी। तो वीडियो हमें काफ़ी मज़ा आया है। आप बताइए आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कर देना वीडियो को प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।